So very good morning everyone. Welcome to Unacademy. Welcome to Kreatryx. So in this session we are going to start about the next chapter, next topic of the electromagnetic field theory. So till now hopefully you have understood about the antenna and you have started to understand the questions which has been asked in the antenna. So in antenna we have discussed till now about the radiation, how radiation takes place, how the current distribution takes place, how the current is function of both space as well as time. After that we discussed about the magnetic vector potential and we discussed about the field radiated by the Hertzian dipole antenna. With the help of that Hertzian dipole antenna, we have discussed how to calculate the field radiated by the linear dipole antenna. Once we have calculated the field radiated by the linear dipole antenna, so in the last class we discussed mainly about the half-wave dipole antenna and we tried to calculate the fields radiated by the half-wave dipole antenna. So all in all, we have now a better idea to understand how the fields are being radiated by these standard antennas, where mainly we discussed about the Hertzian and linear dipole antenna. So in today's class, we are going to understand about the radiation pattern, that what are the radiation pattern of different antennas and what you can basically judge about these radiation patterns. So before that, let me introduce myself. My name is Vishal Soni and I have cleared ESE examination 2 times. Right now I'm teaching on Unacademy with more than 16 million watch minutes, and in the last 30 days 2 million watch minutes. You can also follow me on Unacademy. This is the link of my Unacademy special classes, so you can go and follow all the special classes there. Okay, so you can go and follow all the special classes. So I have conducted special classes on Nyquist plot, Fourier series, latches and flip-flop, double integration, complex numbers. Lot of special classes are there, and also lot of problem solvings are also there. You can go and watch those lectures. You will be having a better idea on problem solving skills and maybe some other topics also. Now if you are going for the preparation of GATE 2022, then this is the very ideal time for you to start your preparation, because if you haven't started it, maybe once you are thinking about starting in April, May, so it will be the loss of 4 to 5 months. अगर आप अभी से start करते हैं, so you will be having daily live classes on Unacademy. Crash courses will be given to you. Weekly tests will be there. Every 4th class is the doubt solving session, so you can clear your doubts there. Apart from that, in every class also you can clear your doubts. Other batches of doubt solving also run parallelly, so you can also clear your doubts there. Now the batches will run both in English and in Hindi, and rank improvement batches will also be there. Apart from that, there is also one iconic subscription. In iconic subscription you get a personal coach. That personal coach will giving you the study planners. आपको बस blindly वो study plan follow करना है. In between you will be having the study booster sessions with the toppers and with the teachers, and the personalized test analysis will also be there. मतलब आप टेस्ट दे के आएंगे तो आपको पूरी की पूरी टेस्ट एनालिसिस मिल जाएगी. What are your strength, what are your weaknesses, और आपको कहाँ कहाँ पे improvement करनी है. Apart from that, you will be having study material for iconic subscription, which means the study materials will be designed according to you and you will be having a very good study material. Apart from that, there is also interview guidance and mains answer writing guidance that is included in iconic. So जब भी आप subscription ले रहे हो, because November month is about to end, so you should use this coupon code. So this coupon code will give you the maximum possible discount. Apart from that, all guidance of Unacademy teachers. So this coupon code is very important for everyone. If you use this coupon code, then this gives us motivation. Apart from that, you also get discount in your subscription price. ठीक है, चलो start करते हैं आज का session. So let me discuss about the radiation pattern. Before that, I would like to know, have you understood all the concepts which I have taught till now? So if you have understood, let me know so that I can start the radiation pattern. So I hope everyone has understood all the concepts of the radiation pattern, all the concepts of the antenna. So let me define the radiation pattern. This radiation pattern is also known as an antenna pattern. Antenna pattern. It is also known as antenna pattern. Second, this is basically the graphical representation of, so it is graphical representation of radiation characteristics of antenna with respect to space.
with respect to space, which means we want to understand how the radiation characteristics are being varying with respect to space. Space means r theta phi, you can generally say r theta phi. So radiation pattern basically gives you the idea of the radiation characteristics of the antenna with respect to space, which means with respect to space, what are the variations in the radiation. Maybe we can talk about the radiation intensity, we can talk about the directive gain, we can also talk about power gain, power received by the antenna. Everything is related with your radiation properties. So what are the properties that you can understand in this is, first of all, maybe we can discuss about the radiation intensity. That what is the radiation intensity at any point in the space. Radiation intensity. We can also discuss about the directive gain, that in which direction, what is the value of the gain. We can also talk about the power gain, okay, efficiency. So these are certain properties which are based on the radiation pattern, okay, and also polarization. So all these things are basically calculated from the radiation pattern. Fine. So very important point of radiation pattern is that you actually want to plot the radiation characteristic in space, and that in space you want to calculate further following parameters by using the radiation pattern, or maybe with the help of the radiation pattern also. So how many types of antennas are there? Let me give you some antennas. On the basis of that, we will try to find out their radiations, okay. So generally there are three types of antennas which we can talk about. One is your isotropic antenna. Sometimes antenna is also called as radiator, so you can call it as isotropic antenna. Another one is your directive antenna. Another one is your directive antenna. And third one is your omnidirectional antenna. Third one is omnidirectional antenna. So let us try to find out the difference or similarities in them. If you are having any isotropic antenna, so this antenna radiates uniformly in all directions. Radiates uniformly in all directions. In all directions. That means their E theta S is independent of R theta phi. So they are independent of theta and phi. Okay. So if they are radiating uniformly in all the directions, which means their electric field and magnetic field has to be independent of theta and phi, और मे बी दे शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ द ओरिएंटेशन, क्योंकि अगर वो हर डायरेक्शन में सेम तरीके से रेडिएट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई डायरेक्शन, and ultimately you should have the idea that maybe this radiation field will not depend on theta and phi. What happens in directive antenna? It radiates more in certain directions, and less in certain directions, So very obviously you can say that in this case your E theta S and H phi S will remain the function of theta and phi. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका E theta S H phi S आता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा फाई आता है, यहाँ पे आपका आता है डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई. So this is the basic difference between isotropic pattern or maybe isotropic antenna and directive antenna. Directive मतलब किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा रेडिएट करेगा, बाकी डायरेक्शंस में कम रेडिएट करेगा. इसका मतलब कि ये सारी डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली रेडिएट करेगा. There is very one confusing term omnidirectional antenna which generally be associated with isotropic antenna, but there is a difference between omnidirectional antenna and isotropic antenna. What is the basic difference? Let us try to understand.
This omnidirectional antenna is combination of isotropic, or maybe you should say directional plus non-directional. Okay, it is wrong to say isotropic. It is combination of non-directional plus directional radiation. Directional radiation. How does we define it? Let me give you the idea. For example, in this case, your E theta s you want to plot. So once you will be plotting E theta s versus theta for constant phi. For constant phi. This will be directional. इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं अभी. This will be directional. बहुत ध्यान से समझना इसको. It will be directional, but which means it will depend upon theta and phi, or maybe any one of them. It will be directional. But the second, if you plot, which means if you are plotting E theta s versus phi, so that is going to be for theta equal to 90 degree. Okay, that will be non-directional. So that will be non-directional. So first of all, let us try to understand the radiation patterns. How many types of antennas are there? Generally, we associate isotropic and omnidirectional to be same, but that is not. Both are completely different. With their interpretation is completely different. This and this. Okay, do not consider them to be same. So if in question it comes that it is omnidirectional antenna, it does not mean that it radiates equally in all the direction. It means that there may be combination of non-directional and directional radiation pattern. If you are plotting the graph of mod of E theta s versus theta for some constant phi, they will have certain directions in which they will radiate. But if you are plotting E theta s versus phi for theta is equal to 90 degrees specifically, so in that particular case, your radiation pattern will become uniform, or maybe it will become independent of theta and phi. So let us try to understand more about this omnidirectional pattern. So let me define omnidirectional pattern in a little bit elaborative manner. Omnidirectional pattern. So when we say we want to discuss the omnidirectional pattern, it means there are certain things that you can plot, which means the first thing is that once you will be plotting mod of E theta s versus theta for constant phi. Generally this phi is taken to be 0 degree. Okay, generally this phi is taken to be 0 degree, but you can take any other value also for constant phi. And mod of E theta s versus phi for constant theta, that too equal to 90 degree. एक तो ये definition होती है. There is also another definition. This. Similarly, you can also do the same thing with your H phi's, because you know that there is the difference of eta only. सिर्फ eta का difference आता है for constant phi and mod of H phi s versus phi for constant theta, that to 90 degree. Okay, so there are basically two variations of this which you can talk about. Now in both the cases, the first one is always known as directional. This first one is called as directional pattern. Okay, and these two are called as non-directional. तो कहने का मतलब है चाहे आप E theta s versus phi plot कर लो, चाहे आप H phi s versus phi plot कर लो, किसी भी केस में, because you know that there will be the difference of eta only in the plotting. तो plotting में सिर्फ eta का difference आएगा, so it will not make a difference. And this is your non-directional pattern.
नॉन डायरेक्शनल मीन्स इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल पैटर्न। ध्यान से सुनते रहना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब। तो ये दोनों आपकी मोर और लेस सिमिलर डेफिनेशंस होती है। सो समटाइम्स द डायरेक्शनल पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज ई प्लेन पैटर्न एंड दिस नॉन डायरेक्शनल पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज एच प्लेन पैटर्न। सो द नेम्स आर लाइक गिवन लाइक दैट वेन एवर यू प्लॉट अ डायरेक्शनल पैटर्न। अब इसमें ये नहीं देखना है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, दोनों में से जो भी बना लो, whatever may be the directional pattern, it is called as your E plane pattern, and whatever may be the non-directional pattern, it is called as your H plane pattern. So this directional pattern is sometimes defined as, this is also called as E plane pattern, and it is called as H plane pattern. ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। क्योंकि देखो आपको पता है कि E is the function of theta है ना, means E is having the direction of theta. So this E theta is versus theta when you are plotting E theta is versus theta and you are taking phi constant. Similarly, if you are plotting H phi is versus theta for a constant phi, then this will always categorize in the form of E plane pattern, because E plane pattern means electric field is always having the a theta cap direction, and if you are plotting with respect to theta, then that particular plane that particular pattern is called as E plane pattern. Similarly, H is having the direction of a phi cap, and if you are plotting anything versus phi, then that pattern is also known as H plane pattern. So these are two basic things which you should understand for a omnidirectional pattern, because later on we have to understand that most of the radiation patterns falls under the category of the omnidirectional pattern. They generally do not fall under the category of isotropic or maybe completely directive. They have both the natures, directive as well as non-directive. This we have to understand. तो पहले एक बार इसको समझो, फिर इसके आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके कुछ और भी नाम होते हैं, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, थोड़ा और जो इसके टेक्निकल नाम होते हैं और देखेंगे, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू स्टडी लेटर ऑन, बट एज ऑफ नाउ यू शुड बी हैविंग दिस बेसिक आइडिया दैट इन ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न when you are plotting for phi equal to constant, which means you are plotting for a phi equal to constant plane. If phi is equal to constant plane is given, you will call it as E plane pattern, and if theta equal to constant plane is given to you, you will call it as H plane pattern. Clear? चले आगे चलो. So let us try to understand the radiation pattern of Hertzian dipole antenna. How can we understand the radiation pattern of Hertzian dipole antenna? And let us try to understand the radiation pattern of Hertzian dipole antenna falls under the category of isotropic, directive or omnidirectional. So let us try to have an idea on this. So ultimately in radiation pattern, what we want to plot? We want to plot either E theta s versus theta for constant phi. Okay, this is something which we want to plot, and mod of H phi is mod of E theta s versus phi for theta equal to pi by 2. Okay, ये हमको प्लॉट करना फाइनली. दिस इज समथिंग विच वी वांटेड टू प्लॉट. सो लेट अस ट्राई टू प्लॉट दीज थिंग्स one by one. For Hertzian dipole antenna, hopefully everyone understands what is the value of E theta s. So the value of E theta s becomes j eta I naught upon 4 pi r beta dl sin theta e to the power minus j beta r. चेक कर लिया ना आपने? तो ये हमारा आ गया E theta s. Now I wanted to have this E theta s, maybe all the other parameters if I take under the consideration, then I can say that this E theta s will be having some function will be having some function j eta I naught upon 4 pi r beta dl e to the power minus j beta r sin theta. So I hope we can write it like this. Fine. So हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा का पूरा जो था इसमें से साइन थीटा को बाहर कर दिया, बाकी रिमेनिंग टर्म को हमने यहीं पे कंबाइन किया. And if you want to write the direction, you can also write the direction. The direction will become a theta cap. Direction also I'm combining it here. This will be the part of it. Now what I want to do in this case, you can understand. I wanted to plot this mod of E theta s versus theta for some constant phi. E theta s versus phi for some constant theta. There is no
description of the value of R, which means what you can say that whenever we are plotting the radiation pattern is always plotted by considering the factor of the values of theta and phi only, or the values of R can be treated as constant. So whenever you plot the radiation pattern, in radiation pattern we do not generally signify the value of R, that what is the value of R or what may be the radiation at a certain distance. So we are not interested about the distance, we are only interested about the direction, that in which direction how much the radiation is taking place. So you can consider this complete quantity to maybe some constant. So if I call this quantity to be K, so you can write this quantity to be K sine theta. So ultimately you are having your E theta as to be some K A theta cap sine theta. Suppose if I take this E theta as magnitude outside, then they will become maybe some K mod of sine theta. This is something which I have got as of now. ठीक है, ये हमको मिल गया. Now I want to plot this. So if I want to plot this for E plane pattern, you know that for E plane pattern what will happen? For E plane pattern your theta will be, phi will be constant, and you have to plot mod of E theta s versus theta. So ultimately you want to plot this thing. अभी कैसे plot होगा इसको जरा देखो. This is something which you want to plot. अब ये plot करने के लिए आपको चाहिए होता है एक polar plane. You need a polar plane to plot this. So how the polar plane looks like? Let me give you the idea of it. This is the polar plane that we are having. Polar plane. Okay. You can call this axis to be z axis. तो आपको देखो थीटा का भी एक आइडिया मिल जाएगा. अगर इस एक्सिस को हम लोग z axis ले लें, okay, so you can also have the idea of the theta. Positive z axis से जितना भी एंगल बनेगा, that angle will be called as theta. So I can call this line to be theta equal to 0 degree. तो इसको अपने कंट्रोल सिस्टम वाले थीटा से रिलेट मत करना, ये हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला थीटा लेके चल रहे हैं. 180 डिग्री एंड फ्रॉम इट देयर योर थीटा विल बिकम 270 डिग्री समथिंग लाइक दिस. तो ये आपका बनेगा थीटा. तो आपको इसकी प्लॉटिंग करनी है. तो व्हाट यू शुड डू, फर्स्ट ऑफ ऑल you should put the values of E theta and depending upon the values of theta you should plot all the points that you are having here. For example, अगर मैं इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूँगा तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम मुझे k मिल जाएगी. व्हाट हैपेंस एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यू विल हैव अनदर वैल्यू ऑफ इट एंड सो ऑन. सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू प्लॉट ऑल दीज वैल्यूज सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर कट ग्राफ ऑफ दिस थिंग. फिर मैं आपको दिखाता भी वो ग्राफ बनता कैसे. देखिए, suppose if I make a table of all these values, थीटा वर्सेस साइन थीटा. तो अब हमें इसको बनाना नहीं है, बस हमें लास्ट में देख के फिर जज करना है और वहाँ से कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करने और फाइनल आंसर भी आपको बताना है कि सपोज इफ आई टेक सम वैल्यूज ऑफ थीटा, हाउ द साइन थीटा वेरीज. सो इफ इट इज 0 दिस विल बिकम 0. इफ इट इज पाई बाई 4 विल हैव 1 बाई रूट 2. If it is pi by 2, it will have 1. If it is maybe pi, you will be having minus 1. Again, if theta is changing to some 3 pi by 2, again you will be having this value as minus 1. This will be 0. Okay. Again for 2 pi, you will be having this value as 0. Something like this. ठीक है. तो ये कुछ मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लॉट किया. अगर ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे प्लॉट करते हो तो देखो आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे. वो पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे. देखिए, exactly theta equal to 0 पे what is the magnitude? Magnitude is 0. Yes or no? So you have to consider this like a polar pattern in which you are interested in the magnitude and the direction. Similarly, if I take any theta equal to 45 degree, for example this is your theta equal to 45 degree. So what is the magnitude along this? This magnitude becomes root 2. This magnitude becomes root 2. Similarly, what happens at 90 degree? This magnitude becomes 1. Yes or no? Similarly, at 180 degree, again it becomes 0.
So if I connect all these points, maybe I'll get the point like this. Fine. Similarly on the left hand side also you will be having the same point, क्योंकि अब इसके आगे भी theta vary करेगा. So you will again have this point. So what you have to do, you have to vary values of this theta. As the values of this theta are varying, you will be having different lengths in the polar plane. So this is your polar plane. कभी आपको ये length मिलेगी, कभी आपको ये दूसरी length मिलेगी. ये देखिए, at some certain angle you will be having this length, and some certain angle you will be having another length, this length, this length. और आप देख रहे होगे कि लेंथ आपकी बढ़ती भी जा रही है ना. यहाँ पे अगर आप लेंथ को कंसिडर करोगे, so this was the length initially, then this length gradually increased, then this increased, this increased. So you have to connect all these points only. आपका 0.1 डिग्री पे भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, तो 0.1 डिग्री पे भी आप कनेक्ट करेंगे एंड समथिंग लाइक दैट. सो यू आर गोइंग टू गेट अ पैटर्न समथिंग लाइक दैट विच वी हैव विजुअलाइज्ड विद द mathematical parameter or maybe with the help of the table. So with the help of the table you can understand that Hertzian dipole is having the maximum radiation along theta equal to 90 degree and it is having zero radiation along the z axis. So should I call this particular pattern to be directional pattern or not? यहाँ पे देखो आप क्या बना रहे थे, you were making E plane pattern in which phi was constant and you wanted to plot E theta s versus theta. So you can see that this E plane pattern is coming out to be directional in nature. यही था अपना काम. हम बोल रहे थे कि अगर अपना ई प्लेन पैटर्न डायरेक्शनल आ जाता है ना, तो शायद ओमनी डायरेक्शनल की तरफ हमने पहला कदम बढ़ा दिया है. सो मे बी वी हैव वन स्टेप टुवर्ड्स क्लोजर टू द ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न. सो इन दिस केस यू कैन से दैट since your mod of E theta s versus theta is coming out to be in this format, or maybe you can say that this pattern is completely directional pattern. Why it is completely directional pattern? Because if the direction is changing or the theta is changing, the magnitude of the mod of E theta s is changing. और अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रेडिएशन थ्रो कर रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को थ्रो कर रहा है. वो यहाँ से भी दिख रहा है दैट इफ यू विल चेंज योर थीटा, द वैल्यू ऑफ दिस मॉड ई थीटा विल चेंज और इट विल थ्रो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ई थीटा इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट एज ऑफ नाउ? सो होपफुली एवरीवन इज फॉलोइंग दिस थिंग एज ऑफ नाउ. लेट अस ट्राई टू प्लॉट दिस एच प्लेन पैटर्न. तो मैं एच प्लेन पैटर्न भी आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, एच प्लेन पैटर्न. सो व्हाट इज एच प्लेन पैटर्न? ध्यान से सुनते जाओ, बहुत आसान, पूरा डिस्कशन जब खत्म हो जाएगा सो यू विल हैव अ फेयर आइडिया ऑफ इट. ओके, एच प्लेन पैटर्न. सो व्हाट इज एच प्लेन पैटर्न? एच प्लेन नाम से नहीं होता बल्कि प्लेन से होता है. किसके वर्सेस किसका बना रहा हूँ? वर्सेस 5 फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. दिस इज समथिंग विच इज नोन एज एच प्लेन पैटर्न. सो वी नो दैट दिस इज मॉड ऑफ ई थीटा एस, which is somehow we are having k of mod sin theta as of now. Fine. So if I want to plot theta equal to pi by t, this mod of e theta s becomes k. If you put theta equal to pi by 2 here. Now if you are taking value of theta equal to pi by 2 here, can you tell me what will be this plot? Again I am taking this plot here. ये देखो, अब इसको मैं बनाने जा रहा हूँ. theta equal to pi by 2. What is theta equal to pi by 2 plane? So I think everyone knows theta equal to pi by 2 plane means xy plane. This is your xy plane. मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे बना भी देता हूँ. x, y, z. And if you consider this angle to be theta, so theta equal to pi by 2 is xy plane. This is the plane in which theta will be pi by 2. ठीक है, तो उसी को मैंने 2 डायमेंशन में बना के आपको दिखा दिया. ये आ गया. अब ये पैटर्न बनाना, ये कैसे बनाओगे पैटर्न? थीटा तो पाई बाई 2 कर दिया. अब देखो फंक्शन तो है नहीं, इसका मतलब मैं फाई की वैल्यू कुछ भी चेंज करता रहूँ. हाउ टू कैलकुलेट फाई? यू नो दैट फाई इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यस और नो? दिस इज योर फाई. अब मैं फाई की वैल्यू कुछ भी चेंज करता रहूँ, वैल्यू हमेशा के आनी चाहिए. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस लोकस? सो आई थिंक एवरीवन वेरी इजीली कैन टेल मी दैट दिस लोकस इज गोइंग टू बी व्हाट? नथिंग बट अ सर्कल. So this is going to be just a circle, because at every point irrespective of phi I want this magnitude to be k, and what will be the radius of this circle? The radius of this circle is coming out to be k. So you can write this thing. अब मुझे बताना ये वाला जो पैटर्न आ रहा है इसमें मैं फाई को कितना भी चेंज करता जाऊँ, वॉट एवर आई चेंज फाई, दिस वॉट एवर इज द फाई,
whether the strength of the field line is changing or it is constant. So you will say that the strength of field lines are constant, and if the strength of field lines are constant, can I call this pattern to be non-directional pattern or not? So I think everyone will agree with this fact that this is your non-directional pattern. ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, that the Hertzian dipole shows a radiation pattern of type first isotropic, second omnidirectional. So very clearly you have to tell me the answer कि जो हर्ट्जियन डाइपोल होता है उसके रेडिएशन पैटर्न का नेचर क्या होता है. इज इट आइसोट्रॉपिक? आइसोट्रॉपिक का मतलब हमेशा कुछ भी कंडीशन आ जाए हर एक डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्मली रेडिएट करता रहेगा. एंड इन ओमनी डायरेक्शनल केस, इन ए प्लेन पैटर्न इट हैज़ टू बी डायरेक्शनल, बट इन एच प्लेन पैटर्न इट हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट. सो यू हैव टू टेल मी that what is the radiation pattern of a Hertzian dipole. Should I call it as isotropic or should I call it as omnidirectional? Bolo. So it is omnidirectional in nature. So very important point. Do not confuse the word omnidirectional with isotropic. Isotropic is something different and omnidirectional is something different. Omnidirectional has both the natures. Once you will go for the E plane pattern, it will show you directive behavior. जैसे कि इस केस में दिखा रहा है कि अगर आप थीटा चेंज करते जाओगे तो इसकी स्ट्रेंथ चेंज होती जा रही है. यहाँ पे स्ट्रेंथ है कुछ के, यहाँ पे कहीं पे स्ट्रेंथ है 45 डिग्री पे k/√2. ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आपको मिलेगी. यहाँ पे कुछ k/√2, ऐसा किसी और पॉइंट पे कुछ और हो जाएगा. सो दिस विल ग्रेजुअली चेंज once you will change your theta values, but in this case the value of phi is not being changed. If the value of phi is being changed, the strength is not being changed. So you can call this pattern to be omnidirectional pattern. तो देखो ये दिखता कैसे, अगर आप इन दोनों को अलग अलग बना के देखना चाहोगे तो एग्जैक्टली अगर आप प्लॉट करोगे ना मैटलैब पे तो आपको ये ऐसा दिखेगा. दिस इज योर ई प्लेन पैटर्न जो अभी हम लोगों ने बनाया था. ये एग्जैक्टली सर्कल बनता है. ठीक है, अगर सारे पॉइंट्स आप ऐड कर दोगे, अब हम सारे पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं नहीं, बट अगर आप सारे पॉइंट्स ऐड कर दोगे थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपने वेरिएशन कर दिया, सो दिस इज द ई प्लेन पैटर्न दैट यू विल बी हैविंग, एंड दिस इज योर एच प्लेन पैटर्न दैट वी हैव प्लॉटेड. दिस इज योर एच प्लेन पैटर्न, है ना. तो ई प्लेन और एच प्लेन का मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के हो सकते हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के हो सकते हैं. ई प्लेन एच प्लेन पैटर्न बेसिकली रिफर्स टू द planes which we are talking about, or the planes that we are considering here. So if we consider this plane of E plane pattern, obviously this will have mod of E theta s versus theta, or mod of H phi s versus theta for constant phi, for constant phi, है ना. ये दोनों का ही बनाओगे तो आपको यही मिलने वाला है. Same thing you are going to have. Similarly for this, this will be mod of E theta s versus phi, or mod of H phi s versus phi for constant theta, और वो भी constant theta कैसा होना चाहिए, π/2. तो ये डेफिनेशन होती है रेडिएशन पैटर्न्स की. इस केस में आपको हमेशा जो रेडिएशन पैटर्न मिलेगा वो ऐसा मिलेगा. स्पेसिफिकली फॉर हर्ट्जियन डाइपोल की हम लोग बात कर रहे हैं, सारे डाइपोल्स की बात नहीं कर रहे हैं. वैसे देखो इसको तो आपने दो अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करके बना लिया, बट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली एक्चुअली दैट द रेडिएशन पैटर्न शुड ऑलवेज बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ई प्लेन पैटर्न एंड एच प्लेन पैटर्न. तो अगर आप इन दोनों प्लेन्स का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो देखो आपको कैसा रेडिएशन पैटर्न दिखेगा. इसमें देखना, अगर ये वाला सिर्फ आप हिस्सा कंसिडर करो, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला दिख रहा है आपको. So is it not looking like E plane pattern? समझिएगा ध्यान से. This is your E plane pattern. Yes or no? Fine. और अगर आप सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन में देखो, ये वाला. So this is the part of H plane pattern. तो अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में आपको दिखाऊं, if I show this thing to you in 3 dimension, so it may look like this. In 3 dimension, this may look like this. उसी का ये 3D पैटर्न है. आपको दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा प्लॉट करना चाहिए. दिस विल बी एक्स वाई जेड. ठीक है, एक पैटर्न तो आपको ये दिखेगा. अभी सर्कल नहीं बन रहा है, ये देखना. ठीक है, और जो दूसरा पैटर्न आपको दिखेगा वो आपको डिफरेंट वैल्यूज के लिए सर्कल मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग थीटा इक्वल टू π/2 ले लें तो एक सर्कल आपको ऐसा मिलेगा, आगे भी और पीछे भी. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे शो कर रखी है कि पहले तो आप ये बना लोगे,
ये तो ई प्लेन पैटर्न बन गया। उसके बाद ये जो आपने साइड में बना रखा है ना ये वाला, दिस इज योर एक्चुअली एच प्लेन पैटर्न विच हैज़ बीन शोन हियर। ये तो एक्स वाई प्लेन में दिया, इसी को आप उठा के हॉरिजॉन्टल कर दो। सो वंस यू विल मेक इट हॉरिजॉन्टल इट विल एक्चुअली पेनिट्रेट दिस ई प्लेन पैटर्न इनसाइड आउट। तो ये इनसाइड आउट पूरा का पूरा पेनिट्रेट करता रहेगा। अब आप अगर ध्यान दें तो आपने जो ये पैटर्न बनाया था, देयर यू हैव फिक्स्ड थीटा इक्वल टू π/2 ओनली, है ना। ये पैटर्न सिर्फ थीटा इक्वल टू π/2 के लिए बनाया था आपने। अगर आप इस थीटा को भी वेरी करते जाएं तो ये प्लेन्स क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, यस और नो। बिकॉज देखो यहाँ पे अगर यही चीज़ मैं बनाता थीटा इक्वल टू π/4 प्लेन के लिए, तो थीटा इक्वल टू π/4 पे दिस वैल्यू वुड हैव बीन 1/√2 एंड यू वुड हैव गॉट अनदर सर्कल विच हैज़ बीन ऑफ स्मॉलर रेडियस। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ और डाल देता तो ये जो सर्कल्स का रेडियस है ये बढ़ता रहता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट थीटा की वैल्यूज़ पे the radius of these circles would have been different. So that is what it has been shown there कि अगर ये आप ये डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स लेते जाओगे तो इसके अंदर भी छोटे छोटे सर्कल्स आपको दिखते चले जाएंगे। एंड फाइनली द रेडिएशन पैटर्न लुक्स लाइक अ एप्पल शेप। दिस इज योर एप्पल शेप रेडिएशन पैटर्न, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न, ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न, है ना। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझ में आया, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द रेडिएशन पैटर्न ऑफ हर्ट्जियन डायपोल नाउ। हम लोगों ने क्या किया, उसको पहले दो 2D डायमेंशंस में देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड इन 2 डिफरेंट डायमेंशंस, व्हिच मीन्स दिस वाज अ 2D डायमेंशन, दिस वाज आल्सो अ 2D डायमेंशन। It was very easy to understand these things in the 2D dimension and to judge the nature. But if you want to actually visualize the radiation pattern, so you can visualize in this form कि ये E plane pattern हो गया, ये H plane pattern हो गया। अब मैं इसी H plane pattern को उठाऊंगा यहाँ से और इसको कर दूंगा horizontal because it is in XY plane. So I'll put this horizontal plane, I'll put it there. अब ये जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो थीटा को भी मैं वेरी कराऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट थीटा द रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल चेंज। जब आप ऊपर से नीचे तक इस प्लेट को डालते जाओगे तो ये छोटे छोटे सर्कल्स बीच में आपको दिखते जाएंगे ऐसे ऐसे। ये प्लेट जब उठा के डालोगे आप, है ना, तो डिफरेंट थीटा की वैल्यूज़ के लिए वो जो सर्कल आएगा वो आपका वेरी करता जाएगा। यहाँ पे भी एक सर्कल आएगा इसके अराउंड, इसके पीछे वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट, तो वही दिखा रहा है एग्जैक्टली थीटा इक्वल टू π/2 पे, एग्जैक्टली थीटा इक्वल टू π/2 पे ये बाहर वाला सर्कल आपको मिल रहा है जो यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर बिल्कुल एग्जैक्टली 3D देखना चाहते हो तो आप ये 3D डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में आपको ये दिख रहा है ई प्लेन पैटर्न, और हर एक ई प्लेन पैटर्न से पास होता हुआ बड़ा बड़ा सा सर्कल भी आपको दिखना चाहिए। ये देखो पूरा बड़ा सा सर्कल, है ना। फिर उसके बाद थीटा चेंज करोगे तो एक सर्कल दूसरा यहाँ से पास करेगा, यस, एंड सो ऑन। जब ये पूरा का पूरा आप प्लॉट करोगे तो द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट इज अल्टीमेटली एप्पल शेप। सो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ हर्ट्जियन डायपोल रेडिएशन पैटर्न, the first thing you should remember that the radiation pattern of Hertzian dipole is omnidirectional in nature. Secondly, you should be able to plot this diagram in 2 dimension for E plane pattern and for H plane pattern, and you should remember the shape of the 3-dimensional pattern which is your apple shape, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, बाकी आपको exact radiation pattern कभी बनाना नहीं होता 3 dimension में। आगे भी हम लोग देखेंगे the radiation pattern we plot in the upcoming lectures that will be only E plane pattern or maybe only H plane pattern। तो वहाँ पे पूरा 3 dimension कभी भी प्लॉट नहीं करेंगे, दो वी अंडरस्टैंड द 3-dimensional ज्योमेट्री ऑफ अ गिवन रेडिएशन पैटर्न, बट वो हम कभी प्लॉट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी कैन नॉट विजुअलाइज इन दैट डीप। हम सिर्फ और सिर्फ 2D में अलग अलग विजुअलाइज कर सकते हैं कि 2D में इसका ग्राफ रफली कैसा बन रहा होगा और 2D में ये H प्लेन पैटर्न रफली कैसा बन रहा होगा। सो दिस इज समथिंग विच वी कैन जज ऑन अ वेरी क्रूड बेसिस, ऑन अ वेरी रफ बेसिस, दैट टू ऑल्सो when the radiation patterns is having only sine and sine theta variation। अगर इसमें phi variation भी आ जाएगा तब और भी मुश्किल हो जाएगा विजुअलाइज करना। But as of now, I think as long as Hertzian dipole is needed, you are very comfortable in plotting this part, you are very comfortable in plotting this part. As long as 3D pattern or the 3D plot is needed, a little bit of imagination is needed to understand this. Maybe if you can visualize this, well and good. If you are not able to visualize this, you should at least visualize these 2 diagrams in your different 2D dimension. Is it okay for everyone? बोलो। तो ये समझिए ना, देखो ऐसा ही समझो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये उठाओ यहाँ से, ठीक है, इसको कर दो ऐसा, ऐसा करने के बाद इसमें लाके बीच में इसको इंसर्ट करते जाओ सारी की प्लेट्स को। अब आपको पता है कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे मेरे ये क्या होंगे, सर्कल्स छोटे होते जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे थीटा सबसे ज़्यादा इस वाले प्लेन में, तो यहाँ पे सर्कल बड़ा। अब ये प्लेट्स आप इंसर्ट करते जा रहे हो, प्लेट्स आपकी छोटी होती जाएंगी, छोटी छोटी प्लेट्स से ऊपर स्टैक कर दी, छोटी छोटी प्लेट्स नीचे स्टैक कर दी, यही बन गया आपका एप्पल शेप,
है ना। तो पूरा का पूरा ये जो शेप आपको दिखेगा ये एप्पल शेप दिखेगा। सेम चीज़ है यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे प्लेट्स को लाके ऐसे इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट किया प्लेट, और जैसे जैसे प्लेट्स ऊपर जाती जा रही है उनको ये क्या करता जा रहा है, छोटा करता जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड ऑल। समझ गए ना सब लोग। देखो यहाँ सेम चीज़ कर रहा है। तो दोनों को अगर आप 3 डायमेंशन में विजुलाइज करोगे ना तो काफ़ी आसानी से यहाँ से आपको विजुलाइजेशन मिल जाएगा। ये वाली प्लेट थी आपकी, यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू पाई/2 पे जो भी आपका थीटा इक्वल टू पाई/2 है वहाँ पे आपको सबसे बड़ा सर्कल मिल रहा है। ये थीटा इक्वल टू पाई/2 XY प्लेन, सबसे बड़ा सर्कल। फिर उसके बाद जैसे जैसे अंतर जाते होगे ना प्लेट्स का साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा एंड सो ऑन, और यहाँ पे प्लेट्स का साइज सबसे छोटा होगा। फाइन। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एटलीस्ट दिस मच ऑफ थिंग्स। तो आपको क्या क्या याद रखना है, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। In case of Hertzian dipole, you have to remember the 2D pattern of E plane pattern, the 2D pattern of H plane pattern, and the name omnidirectional pattern, and the shape that is your apple shape. तो मैं सारी चीज़ें एक जगह कंपाइल कर देता हूँ। First, radiation pattern of Hertzian dipole includes radiation pattern of Hertzian dipole first point is omnidirectional, has an apple shape। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, और बाकी प्लॉटिंग जो आपको है ओमनी डायरेक्शनल वाली आनी चाहिए, एटलीस्ट 2 डायमेंशन में दो आनी चाहिए। तो जनरली जो आप रेडिएशन पैटर्न बनाते हो इन द अपकमिंग लेक्चर्स, मे बी फॉर हाफ वेव डाइपोल, मे बी फॉर एंटीना एरेज ऑल्सो, you only plot the E plane patterns, or maybe you only plot the variation with respect to theta। तो पूरा 3D पैटर्न कभी भी प्लॉट नहीं करते, ना ही आप कभी उसको प्लॉट कर पाओगे। So we only go for this much of discussion in this। Fine। So I think we should have one more discussion after this। Okay, fine। So after the radiation pattern of the Hertzian dipole, there is another discussion which I would like to give you, that is चलो देखो अगला जो डिस्कशन है। सो समटाइम्स व्हेन यू प्लॉट दिस E theta s versus theta, this is also called as amplitude field pattern। Okay, and if we plot versus theta, it is called as power field pattern। It is called as power field pattern। So suppose in case of Hertzian dipole, if you want to plot the power field pattern, how does it look like? The power field pattern will look like this। You know that in case of power field also we have to plot E plane pattern and H plane pattern। So again E plane power pattern, if you want to make it E plane power pattern, तो आपको पता है कैसे बनाना है। मॉड ऑफ E theta s square versus theta for constant phi, for constant phi। So you will be having this value as k square sin square theta। ठीक है, अब आपको k sin theta की जगह पे k square sin square theta बनाना, मतलब you have to put different values of theta and you have to plot them for some constant phi। तो यहाँ पे देखो ये प्लॉट कर रहा है इसको। इस बार जो प्लॉटिंग आएगी ना वो एग्जैक्ट सर्कल जैसी नहीं आएगी, थोड़ी सी बल्ज हो जाएगी ऐसे, क्योंकि अभी साइन स्क्वायर थीटा का प्लॉट है। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका अगेन वही z एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पोलर एक्सिस। तो देखो थीटा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इंक्रीजिंग। अब जैसे जैसे डिफरेंट थीटा डालोगे तो ये इसने पूरी प्लॉटिंग यहाँ पे करके दिखाई हुई है कि once you will change the values of theta, how the sin square theta is going to behave। So are you understanding the difference between the pattern of the sin theta and sin square theta? If you are plotting for sin theta,
it was coming out to be exactly circle. So this was for sin theta plotting. तो यहाँ पे ये भी सर्कल जैसा आ रहा था exactly, but in this case you will be having a little bit dumbbell shape kind of thing which is shown here. Similarly, if I give you the idea of this thing, H plane power pattern. So how the H plane power pattern look like? It becomes mod of E theta s square versus phi for theta equal to pi by 2. फिर से भाई जैसे ही pi by 2 रखोगे तो ये हो जाएगा mod of E theta square equal to K square. Again this will become a circle. So again you can see the power pattern of H plane pattern is coming out to be circle. So you have made this two different two dimensional plot, but actually what will happen, यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा. इसको बाहर निकालोगे, इसको करोगे सीधा, इसको ले जाओगे और यहाँ बीच में इनको इंसर्ट करते जाओगे. तो असल में जो आपको रेडिएशन पैटर्न 3 डायमेंशन में दिखना चाहिए उसको आप थोड़ा बहुत यहाँ से विजुअलाइजेशन ले सकते हो कि ऐसा. अब बिल्कुल एप्पल जैसा नहीं, बट थोड़ा आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि यहाँ पे छोटे सर्कल्स पे अंदर मुझे इंसर्ट कराने है ना. तो ये छोटे सर्कल्स भी आपके बीच में इंसर्ट हो जाएंगे. तो आप ऐसे समझो कि दिस विल बी द फ्रंट एंड एंड दिस एवरी एंड ऑफ दिस विल बी हैविंग एनसर्कल्ड प्लेट इनसाइड ऑफ इट. तो सबके अंदर पूरी की पूरी प्लेट डालोगे. तो अब बस जो लास्ट केस में आपको रेडिएशन पैटर्न ऐसा दिख रहा था, दिस वन, दिस थिंग विल बिकम नाउ दिस, ऐसा हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा बाहर निकल आएगा. बाकी इसके पीछे वाला जो मूवमेंट रहेगा दैट विल बी सेम, दिस मूवमेंट विल बी सेम. ठीक है, थोड़ा बहुत आप विजुअलाइजेशन ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. सो हैव यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स of the radiation pattern? So hopefully you have got all the idea of the radiation pattern. If you can understand, let me know in the comment section, so I'll give you the concluding remarks. And that is why tomorrow's class become very important, because tomorrow we will have a generic discussion that how can you plot radiation pattern of any antenna irrespective of their length. Because Hertzian dipole gives you the basic, it has given you the basic that what is E theta s, what is H phi s, everything it has given you. Once you are comfortable in these patterns, तो ये देखो इस पे ना थोड़ा आपको लेमैन लेवल पे क्लैरिटी लेनी होगी. You cannot invest your lot of time just to visualize the radiation pattern, because nobody can. You have to take the help of the MATLAB or maybe some software which gives you the plotting of the radiation pattern. As a human being, we are more comfortable in plotting two different two-dimensional plot instead of going for the visualization of three-dimensional plot every time. हम लोग बार बार 2 डायमेंशन बनाएंगे और 3 डायमेंशन का जो ग्राफिकल पिक्चर है उससे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की हेल्प ले लेंगे कि दिस कुड हैव बीन द डायग्राम दैट वी नीड. ओके, चलो. So everyone who is present in this class, you have to follow all my special classes on this link I have already given to you. You can connect with me on this different social media. So these are Telegram channels and this is the Unacademy profile where you should follow me. Now, if you want to take the subscription, so you should take the subscription immediately, because आप कोशिश करो कि फेब तक जाते जाते आपका कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट फिनिश हो जाए. And if you can spend the money as low as that, then there is no point why not you should come on to the Unacademy Plus. क्योंकि वहाँ पे जो लर्निंग होगी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो और भी चीज़ होंगी, that will be in a much better format, because it is very interactive platform as compared to YouTube. So every time you are taking the subscription, do not forget to use this code. You should use this code every time you are taking the subscription. Similarly, for Iconic, for 12 months you have to pay 45,000. For 24 months you have to pay 66,000. Now this is the link of the URL where you will be getting all the lectures and PDFs of the YouTube sessions. Now this is GATE ECE group which you can join, and these are the channels: Kreatryx, Unacademy GATE questions, Electrical Junction and Engineering Pathshala, which you should follow, because a lot of free content is also present on these channels. Okay, so thank you so much for this session. Let us meet on the next session.